So now we are discussing the anterior triangle of the neck. Again, you are looking at the neck from the side. This is the mandible. This is the trapezius. This is the clavicle. This is the anterior midline neck. Okay? And this quadrangular side of neck, which you are looking right now, this is anterior, this is posterior, is divided by sternocleidomastoid. Is divided into anterior triangle and posterior triangle by sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid. Posterior triangle you have already studied, so I am focusing on anterior triangle. In the posterior triangle, which is, there was this muscle, omohyoid, superior belly and inferior belly. It gets attached to hyoid. Also attached to hyoid is a muscle called digastric, anterior belly and posterior belly of this muscle called digastric. So this muscle with two bellies is digastric. The hyoid one goes ahead like this, and here there is a submental triangle. Rather, this triangle is more completed from the opposite side. Half is also a triangle and two triangles unite. The submental triangle. If you take somebody's chin up and see the chin from below, so this is the chin. If you see the chin from below, these are the two anterior bellies of digastric, and this is the submental triangle. Okay, which you are seeing half on this side, half on this side, half on other side. So if I have to tell you submental triangle, one digastric goes like this, another digastric goes like this, and below is hyoid. Below is hyoid bone. Okay. So this is submental triangle, and this triangle is muscular triangle. Muscular triangle superficially has four muscles. Deep content of the muscular triangle, which is discussed in deep structures of neck. Otherwise, muscular triangle content is four muscles. Content is four muscles. These four muscles are strap muscles. Four muscles are strap muscles. Now here somewhere is the thyroid cartilage. All of us know the thyroid cartilage, which in males, it has two laminae like this, which meet at 90 degree in males. So males therefore have an Adam's apple. In females it is 120 degree. Okay. Now there are some group of muscles over here, which are called as strap muscles. And let us discuss those strap muscles. Those who travel Mumbai, Pune, हाथ ऊपर करो, मुंबई पुणे ट्रैवल किया है कभी भी लाइफ में? एक बार, दो बार, तीन बार किया? तो दो प्रकार है आपके ट्रैवल के. यू डायरेक्टली नॉन स्टॉप गो फ्रॉम मुंबई में. इधर बैठे राधा, आप गाड़ी में बैठे बोरिवली ना, कहाँ मलाड में बैठे, पूना तक गए. Okay, so non-stop. So this muscle starts from sterno. So sterno goes to hyoid. So sternohyoid. Okay. But कुछ लोग जो है, आप गए कि नहीं पुणे कभी? एक्सप्रेस, क्या नाम है आपका? हाँ, ऋषा, सरनेम अग्रवाल मतलब गुजराती, मारवाड़ी, कुछ तो दोनों में से एक रहेगा ना. तो ये लोग ट्रैवल करते हैं, फूड मॉल पे रुकते हैं. मेन पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग टू पुणे इज फूड मॉल पे रुको, खाओ, चिल करो, लाइफ का एंजॉय करो. सो ये आपका लोनावाला है बीच में. सो ये लोग इधर रुकेंगे, मजे करेंगे, फिर पुणे को जाएंगे. This was sternohyoid, this is sternothyroid,
and this is thyrohyoid. Thyrohyoid. Okay. Mumbai Pune, Mumbai Lonavala, Lonavala Pune. What is Mumbai Pune direct? Sterno. What is Mumbai Lonavala? Sternothyroid. Sternothyroid. What is Lonavala Pune? Thyroid. So उसमें ये स्ट्रैप मसल्स होते हैं, they cover the thyroid gland. Thyroid gland को हम लोग इसमें नहीं गिनते. Okay, they are supplied by a nerve called as ansa cervicalis. Ansa cervicalis, we'll discuss it later, which is formed by C1, C2, C3. So this is thyroid cartilage, this is a direct muscle, this is, okay. Now let us talk about this triangle, that is the carotid triangle. Carotid triangle. And roof of these triangles, carotid triangle, digastric triangle, is formed by skin, superficial fascia, investing layer, skin, superficial fascia and investing layer of deep cervical fascia. Okay, उसके अलावा फिर आप बीच में लिख सकते हो ये external jugular vein and all those structures. Now coming to the floor. So यहाँ पे एक मसल है which is called as mylohyoid. Mylohyoid. Mandible से hyoid हो जाता है. Mylohyoid. So in the submental triangle also you find this muscle mylohyoid which goes into digastric triangle floor also. Mylohyoid. See my fingers. मेरे यहाँ पे जो fingers हैं, यहाँ पे जो मैंने लगाए हैं, this is how mylohyoid is, and therefore mylohyoid is called as oral diaphragm. Oral diaphragm. So till now you must have heard of only one diaphragm. That diaphragm is thoracoabdominal diaphragm. Now you will hear of oral diaphragm. You will hear of diaphragma cellae. You will hear of a diaphragm between neck and thorax. You will hear of pelvic diaphragm. You will hear of urogenital diaphragm. Okay, हाँ इतने डायफ्राम्स है बॉडी में. एक लेक्चर होता है पीजी के लिए, उसका नाम है डायफ्राम्स इन द बॉडी. हाँ 2 घंटे का लेक्चर होता है. तो right now we are talking about oral diaphragm. Then this is mylohyoid. Mylohyoid के बाद there is one muscle called as hyoglossus. Hyoglossus. यहाँ पे hyoid bone अभी भी है, hyoid है. So this muscle is hyoglossus. Hyoglossus. Okay, hyoglossus. Behind hyoglossus there is a muscle called as middle constrictor. Middle constrictor. In the pharynx, inside the pharynx, there are 3 constrictor muscles. Superior constrictor, middle constrictor and inferior constrictor. You have heard of them? There are these muscles because हम लोग तो खाते हैं, फेंक देते हैं पीछे. Now this has to go down the esophagus, go down the pharynx. So therefore there are these muscles called as constrictor muscles which contract rhythmically. So पहले superior constrict करेगा, food को नीचे भेजेगा, फिर middle, फिर inferior. That's how food goes in esophagus. Then esophageal muscles constrict. Okay, contract. So there are 3 constrictor muscles. उसमें से middle constrictor of the pharynx is seen here also. Inferior constrictor is seen here. And here there is a membrane. So that membrane is called as thyrohyoid membrane. Thyrohyoid membrane. So now you are in a position to write the structures forming the floor of digastric triangle. What are the structures? शेवटचा मुलगा. हां शेवट कोण आहे? तुझ्या मागे कोणी आहे? तुमको नहीं पूछा, मैं उसको पूछा.
पट्टे पट्टे का शर्ट जिसने पहना है, पट्टे पट्टे का मराठी लोग समझते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्ट्राइप्स, हम लोग पट्टे पट्टे का बोलते हैं। दुकान में गए कि नहीं कभी आप खरीदी करने को, तो उधर वो गुजराती मारवाड़ी दुकानदार रहते हैं, तो उसको हमारा मराठी समझते नहीं, तो हम बोलते पट्टे पट्टे का दिखाओ ना जरा सा। हाँ, माइलोहायोइड, हायोग्लॉसस एंड मिडल कंस्ट्रिक्टर. Digastric triangle, what forms the three structures forming the floor? Mylohyoid, hyoglossus, middle constrictor. What are the four structures? तुम्हारे बाजू वाला, तुम्हारा नाम क्या है? प्रथमेश. हाँ, दिग्विजय, बोल दिग्विजय. Four muscles forming the floor. हाँ, मिडल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन एंड हायोग्लॉसस. ये पहले के बुक्स में था, मैंने आपका करंट एडिशन देखा, उसमें हायोग्लॉसस नहीं दिखा रहा. ओके, सो हो गया फ्लोर. नाउ द बाउंड्रीज तो आप लिखोगे, बाउंड्रीज आप लिखोगे. जैसे कैरोटिड ट्रायंगल है, कैरोटिड ट्रायंगल है, उसका पोस्टीरियर बाउंड्री विल बी स्टर्नोक्लेडोमास्टेड, एंटीरो इंफीरियरली विल बी सुपीरियर वेली ऑफ ओमोहयोइड, सुपीरियरली विल बी पोस्टीरियर वेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक. डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल का बहुत इजी है, एंटीरो इंफीरियरली एंटीरियर वेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर इंफीरियरली पोस्टीरियर वेली ऑफ, सुपीरियरली मैंडिबल. ओके, माइलोहायोइड ट्रायंगल सुपीरियर, उसमें ऐसा नहीं हो, ऑन द साइड्स, बोथ द साइड्स इज एंटीरियर वेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड बिलो इज हायोइड बोथ. ओके, वो सबसे इजी है, उसमें खाली सब मेंटल लिम्फ नोड्स, सब मेंटल लिम्फ नोड्स इतना ही होता है इसमें, सब मेंटल लिम्फ नोड्स. ओके, सबमेंटल लिम्फ नोड्स, एखादा आर्टरी वगैरह रहेगा, मेनली सबमेंटल. दिस सबमेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन द टिप ऑफ द टंग. सो उधर कुछ कैंसर वगैरह हुआ तो यहाँ का लिम्फ नोड एनलार्ज होता है. मस्कुलर ट्रायंगल, यू आर वेरी क्लियर, उसका कंटेंट इज दिस मसल्स ओनली, स्ट्रैप मसल्स. ओके, बाउंड्रीज आर एंटीरियर, द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड, sternocleidomastoid and anterior midline neck. Now coming to the carotid triangle. Carotid triangle. Carotid triangle. Now whenever you are asked the contents, किसी भी चीज़ का कंटेंट अगर पूछा, आपको पूछा, आपका दिमाग एकदम क्या हो गया, दिमाग बंद हो जाता है, जैम हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया. तो कंटेंट में ऑलवेज रिमेंबर आर्टरी, वेन, नर्व्स, लिम्फ नोड्स. ओके, तो यहाँ पे अपन चालू करते हैं आर्टरीज. आर्टरीज, बॉम्बे में रहने वाले लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, CCI सुना क्या आपने? दक्षिण मुंबई क्या है? क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया. CCA common carotid artery. So that will be one content. Another content will be internal carotid artery, external carotid artery. Now understand this. This CCA divides at the disc between T3 and T4 into ICA and ECA. At the upper border of thyroid cartilage or disc between T3 and T4.
into ICA and ECA. Internal carotid artery does not give any branch in the neck. Any branch in the neck. Internal carotid artery. काय झालं बाळा? Common carotid artery. Sorry. C3, C4. C3, C4. I'm so sorry. T3, T4 भी बहुत important landmark है. So that is also very the angle of Louis. Sterno. We will be studying this in the next thorax session. Okay. Between sternum and manubrium, this angle is also T4. So T4 भी एक important है. C4 भी important है. Okay. External carotid artery gives 5 branches here. 5 branches. So we'll discuss external carotid artery towards the end. किसका लेक्चर है इसके बाद? हाँ? क्या लेक्चर है? अपन थोड़ा दादागिरी कर सकते हैं इसके ऊपर. 15 मिनट छीन लेंगे हम लोग. ओके. Common carotid artery. Then veins. Internal jugular vein. Internal jugular vein. And its tributaries. And its tributaries. And tributaries. Nerves. VHS. नार्वेकर काय VHS चा फुल फॉर्म काय आहे? हां, एनीबडी? जरा हिस्ट्री वाचणार. हां, टेप होती और DVD प्लेयर होता. अजून पृथ्वीराज, कोणी अजून गुगलचा वापर न करता भारतीय सराटे सर आपल्या समाजामधलं काही असो, ठीक आहे. वेगस, विश्व हिंदू सभा. वेगस हाइपोग्लॉसल, तो सरांनी सांगितलंय सभा, और सभा में बहुत सारे लोग होते हैं. सो स्पाइनल एक्सेसरी, sympathetic chain and superior laryngeal nerve. So write this, I'll come. इतना क्या आप सडनली डिस्कस करने लगते हैं कि आर यू डिस्कसिंग व्हाट आर द 8 branches of external carotid? External carotid artery gives 8 branches. यहाँ पे 5 branches in carotid, 3 branches in parotid gland. मैं नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनाया, सब चुप नहीं करने देते. 3 anterior, 1 medial, 2 posterior and 2 terminal. Okay. 3 anterior कैसे याद रखेंगे? मोबाइल कवर कार्ड आणि त्याला ह्याच्यात कवर काढायची गरज नाही, त्याच्यात लावून ठेव. मला तुझा अभ्यास डिस्टर्ब नाही करायचा. कवर काढायला लागेल. काढ. आपल्याला हाँ अच्छा इधर लगा. बाप रे, मेरा इतना अच्छा मोबाइल
मेरा ये हो रहा है, इधर 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 रखो, इसके इधर। तो मोबाइल पे ध्यान मत दे। स्टार्ट। So external carotid artery gives 8 branches. There are 2 ways of classifying these 8 branches. One is as per the direction of the branches. Second is as per location of the branches. As per location of the branches, 5 branches are given in carotid triangle and 3 branches are given in parotid gland. So this is as per location. Now as per the direction or from which the branches are given, 3 anterior. How do you remember the 3 anterior branches? See, thyroid is here, then comes tongue, then comes face. So you write it like this: superior thyroid, lingual and facial. So that facial what you had studied is coming from external carotid. Thyroid, tongue, face. What is there on the medial side here inside? Pharynx. So medial pharyngeal. Medial pharyngeal. Okay? What is there posterior? See, one branch goes like this. One branch goes like this. One goes posterior to ear. So posterior auricular. One goes to the occiput. What is there posteriorly? Occiput. So, and occipital. Okay? 2 terminal branches. आपके भी जैसे 2 टर्मिनल्स होते हैं वैसे 2 टर्मिनल ब्रांचेस. One is superficial temporal and 2 is maxillary. Superficial temporal and maxillary. Now, how do you remember of these branches? How many are in parotid? How many are in carotid triangle? To remember this, remember in parotid there are 2 terminal branches. Superficial temporal and maxillary, and there is posterior auricular. Remaining 5 branches are here in the carotid. Got it? So remaining, what will be remaining 5 branches? The 3 anterior. 3 anterior will be here, 1 medial will be here, and 1 posterior, that is occipital. Okay? And 2 terminal and posterior auricular will be in parotid gland. So these are the 2 ways of remembering and writing the branches of external carotid artery. Thank you. Thank you. Okay. So ये समझा आपको? Okay. So now the last. काय झालं बाळा? क्या हो गया? अरे तेरा लिखने का रह गया? आज PSM है आपका. कहाँ जाते घूमने, स्टडी करने को, स्टडी टूर पर? हाँ, घूमने को नहीं, मतलब कितने लोग? सब लोग जाते हैं एक साथ, आधे लेक्चर 30 पीपल जाते हैं. कहाँ से लेके जाते हैं? धारावी? हाँ, स्लमडॉग मिलेनियर. हाँ, ओके. आपका हो गया क्या लिख के? नहीं, तू लिख पहले, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. Now the contents of digastric triangle. अभी आप बोलेंगे कि सर वैसा ही बोलो ना, आर्टरी नर्व, वैसा नहीं है उसका, अनफॉर्चुनेटली. उसका कंटेंट कैसा मालूम है? कंटेंट सुपरफिशियल टू माइलोहाइड, कंटेंट सुपरफिशियल टू हायोग्लोसिस एंड कंटेंट सुपरफिशियल टू मीडियल कंस्ट्रिक्टर. ऐसा है, ऐसा है.
कंटेंट सुपरफिशियल टू माइलोहयोइड, ये तो नाराज है क्या मेरे से? हाँ नहीं, कंटेंट सुपरफिशियल टू माइलोहयोइड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, माइलोहयोइड is superficial. Now understand this, how in a cut section, this is mylohyoid, this is mylohyoid of the other side. Rather, to be precise, this is mylohyoid, this is mylohyoid, cut section में, transverse section में. And submandibular gland in a cut section is J-shaped. Is J-shaped. उसका superficial part is superficial to mylohyoid, deep part is deep to mylohyoid. And here is hyoglossus. Here is hyoglossus. So hyoglossus उसके नीचे से आ रहा है. So deep part is between mylohyoid and hyoglossus. समझ रहे हैं? So structure superficial to mylohyoid will be superficial part of submandibular gland. Structure superficial to hyoglossus will be deep part of submandibular gland. मैं गलत जगह लिखा, SMG is submandibular gland. Now structures superficial to, कशाविषयी बोलतो आपण? स्ट्रक्चर नाही तर तिसरं काय उरलं? मिडल कंस्ट्रिक्टर. यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, दो में. पीछे सब पैरोटिड ग्लैंड है. कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड. So पीछे there is parotid gland. So that is the superficial structure, हाँ, superficial. तो in short, digastric triangle का content is submandibular gland and parotid gland. Apex of parotid, lower part. और उसका deepest content क्या है मालूम है क्या? Deep parotid gland, और उसके अंदर कौन सा आर्टरी जाता है? बरोबर क्या नहीं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसमें एंटर करता है, लास्ट 3 ब्रांचेस देता है. तो उसका सुपरफिशियल कंटेंट है. उसका डीपेस्ट कंटेंट है कैरोटिड शीट. हेड नेक फेस मतलब आपको कैरोटिड शीट एंड इट्स कंटेंट आना चाहिए. हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन यहाँ पे है. कैरोटिड शीट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उसमें रहती, वो ब्रेन को सप्लाई करने वाली. एक्सटर्नल कैरोटिड को ऐसा ही छोड़ दिए. किसी किसी घर में रहते हैं ना, एक आवड़ता बच्चा, नावड़ता बच्चा. अभी आप आपका विक्टिम कार्ड मत निकालो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ बचपन में. ये अपन ने वो बचपन में स्टोरी सुनी ना, ध्रुव महाराज. ध्रुव सुना है कि नहीं किसी? क्या बात कर रहे? वो ध्रुव, वो अपने फादर के लैब पे चढ़ने को जाता है, फिर उसकी स्टेप मदर उसको नीचे खींचती है. He was trying to get on his father's lap. He wanted laptop top of the lap of his father. तो उसको नीचे खींचा, फिर वो जंगल में गया. तो आवड़ता ना आवड़ता, तो ही ध्रुव महाराज का वो सावत्र भाव एकदम उसको कैरोटिड शीट में रखा है. ये हमारे ध्रुव महाराज है. तेरे को जाते खोज करने गए, वो बाहर के लोग इसको सप्लाई करते. ध्रुव तारा माहिती ना तुम्हाला? पोलस्टार, उसका ये स्टोरी है, बाद में गूगल करो. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस +3 अदर नर्व्स आर देयर. द लोअर 3 क्रेनियल नर्व, 9, 10, 11, 12, वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं. वेगस कंटिन्यूस रहता है. हाँ, तो यहाँ पे इंटरनल है, यहाँ पे एक्सटर्नल है. ओके, तो बीच में क्या है? बीच में आर स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. क्या है? स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन
internal carotid and external carotid. So superficial, deep and intermediate. Intermediate are nothing but contents passing between ECA and ICA. कैसे याद रखोगे? आ जाओ. You start doing the setup. How do you remember this? Styloid process. Styloid process. बिश्नोई नहीं, तो अभी तुमको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई. लॉरेंस स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोग्लॉसस मसल. अभी स्टाइलो से चालू किया ना अपन. स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफैरिंजियस मसल, ये मसल है. फिर ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व. अभी फेरेंजियस पे आ गए. ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व तेरे को दिख रहा है क्या? श्योर? तेरे को एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को फील नहीं आ रहा है ना? इग्नोर्ड कॉर्नर में बैठी हो. क्या नाम है तुम्हारा? निवेदित. दिखता है ना? फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. अभी हम और ये जो पैरोटिड है ना, उसका भी एपेक्स ऑफ पैरोटिड. एपेक्स ऑफ पैरोटिड. एपेक्स ऑफ पैरोटिड. कैसे याद रखोगे? वापस देखो, हमने शुरू किया स्टाइलॉइड प्रोसेस, देन स्टाइलोग्लॉसस. उसी को स्टाइलो को ही पकड़ कर रखा है. स्टाइलोफैरेंजियस. जैसे फैरेंजियस पे गए हम बोले ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व, फैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस एंड एपेक्स ऑफ पैरोटिड. ओके. ज़्यादा बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. अरे साइड से करना. नहीं, स्टार्ट बोलने का ऐसा स्टार्ट नहीं करने का. हाँ थांब जरासं. जर तू इकडे थोडंसं तुझं लिहून झालंय ना सगळं? हो, लिख के हो गया है ना? नहीं हुआ उसको तेरा लिख के हो गया. 1, 2, 3, start. So we are discussing the digastric triangle. Digastric triangle, anterior inferiorly there is anterior belly of digastric, posterior inferiorly posterior belly of digastric, superiorly mandible. Floor is formed by mylohyoid, hyoglossus and middle constrictor. The contents of this triangle are divided into structure superficial to mylohyoid, structure superficial to hyoglossus, structure superficial to middle constrictor. Superficial to mylohyoid is superficial part of submandibular gland. Deep part is superficial to hyoglossus. Okay, there are other structures. Hypoglossal nerve भी है वहाँ पे. Okay, that we'll discuss later. Deeper to this is submandibular region. Deeper to this triangle is thyroid. Okay, so we are not discussing deeper parts. And then in the posterior most part there is parotid external carotid artery entering into it, and deepest there is internal carotid, internal jugular vein and vagus, all three lying in carotid sheath. What lies in between are structures passing between external and internal carotid. How do you remember that? Styloid process, styloglossus, stylopharyngeus, glossopharyngeal nerve, pharyngeal branch of vagus and apex of parotid. So that's the structures in the digestive tract. Kelas? Bharat, हाँ परत. 1, 2, 3, start. So now this is carotid triangle. Anterior superiorly is posterior belly of digastric, anterior inferiorly is superior belly of omohyoid,
posteriorly sternocleidomastoid. Three structures form the floor: middle constrictor, inferior constrictor, thyroid membrane, and small part of hyoglossus. Contents of carotid triangle very easy. There is internal carotid dividing into external, common carotid dividing into internal and external carotid at the upper border of, at the disc between C4 and C3 and rather C4 only, and upper border of thyroid cartilage. Then we have the contents. There is vein, internal jugular vein and tributaries. Of course, with external carotid artery there are 5 branches. Nerves: VHS, vagus, hypoglossal. Spinal accessory: sympathetic chain and superior laryngeal nerve. Apart from that, there is carotid body. There is carotid sinus. Carotid body and carotid sinus, which is taught to you in physiology. Thank you.